Now question number 7. Why are different means by which infectious diseases are spread? What are the different means by which infectious diseases spread? वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इन्फेक्टियस डिजीज फैलते हैं? तो बाई एयर डायरेक्टली और एज ए ड्रॉपलेट्स, जैसे कोरोना के बारे में है, आप देखते हैं कोई खांसता है, छींकता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स से हमारे पास जर्म्स आ सकते हैं। बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यदि आप गंदा पानी और गंदा भोजन कर रहे हैं और गंदा पानी कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो आपको ये हो सकता है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बोथ ऑफ देम दे में कंटेन द जर्म्स। देन बाई फोमाइट्स और आर्टिकल्स कंटामिनेटेड बाई द पेशेंट्स एंड फोमाइट बॉर्न डिजीजेज आई टोल्ड यू कि जनरली इन ए फैमिली what do we do? Generally we share many things like comb, mirror, towel, bed sheet, remote, TV, doorknob, many items, creams, generally we share with the family members. And if any one of the member of the family is suffering from any communicable disease, so you know very well what will happen, and same thing is being touched by you and same thing is being touched by the patient, there is a maximum chances of the communication. Then contagious disease simply spread by the contact, and if anyone is suffering from communicable disease and you are sitting beside him or her, you are sharing the bed with him or her, or you are using the towel or the cloths by him or her, you are shaking the hand. These all things means direct contact is there, either through the cloth, through the comb, through the items used by the patient, or directly the body of the patient is in your contact, then certainly the germs will transfer from his body to your body. Then by sexual and blood contact in case of AIDS, syphilis. अब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, सपोज one partner is suffering from the STDs or sexually transmitted disease, so there is a maximum chance that the another partner will be also affected if they make contact with each other. Then last one is the by vectors and carriers. Vectors and carriers, who are they? Vectors and carriers, carriers are those insects who carry disease causing germs from dirty place to your food material, and simply when you eat that food material you suffer from the disease. So they are called carriers like housefly and cockroaches. But vectors, who are vectors? Vectors are those organisms who carry disease causing germs from one place to another place, and part of life cycle of that germs is spent within their body, like mosquito. Female Anopheles mosquito, whenever it bites us, we suffer from malaria. Why? Because inside the body of female Anopheles mosquito there is a protozoan called Plasmodium, and this Plasmodium's life cycle 50% part is completed within the body of female Anopheles mosquito, and when it bites you, at that time these Plasmodium enter in your blood, and then remaining life cycle is completed in your body. So such type of organisms are called vectors. So these are the reasons, different means by which infectious diseases is spread. Next question is, what precaution would you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? आप अपने स्कूल में कौन सी सुविधा
उपलब्ध कराएंगे या क्या प्रिकॉशन लेंगे, किस तरह के उपाय करेंगे कि इन्फेक्टियस डिजीजेज स्कूल में जहां आप सब बच्चों के साथ पढ़ते हैं न फैल पाए। तो airy and well spaced classroom where all the students are sitting, that must be spacious, it should be airy so that the fresh air from outside may let in, and advising students falling sick nor to come to school, and instruction will be given to all the students, if anyone is sufferer of any communicable disease, then he or she should not come to the school. Then ensuring safe drinking water. In school, the water which is supplied, that should be the RO water, it should be fresh, and if all the children are drinking that fresh water, so there is no question from that side. Cleanliness, the classroom, outside the classroom, entire premises of the school must be neat and clean. Then protection against the flies and mosquitoes. There should be no heap of garbage around the school, near the school, otherwise many mosquitoes, flies, germs, they will breed there and they can spread the disease among the children. So there should be proper sanitation, proper neatness, cleanliness, and time to time from the hospital, nurse or doctor, they should come and they should vaccinate the children timely, and regular medical examination of the students, and within a year 3 times, 4 times regular examination from the hospital side must be done. Then what is immunization? Development of immunity or resistance against pathogen through vaccination is called immunization. इम्यूनाइजेशन क्या है? वह एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम बच्चों के बॉडी का इम्यून पावर मजबूत करने के लिए हम टीके लगवाते हैं। जितने टीके लगाए जाते हैं वो किसी न किसी डिजीज के अगेंस्ट में लगाए जाते हैं, और वो हमारे बॉडी में जैसे इंटर करते हैं टीके, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनवाते हैं, और वही एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रह करके और उस डिजीज के जर्म से हमें छुटकारा देते हैं। इस प्रकार व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोग्राम इन विच स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्यून पावर इज मेड बाय द वैक्सीनेशन। मतलब रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाया जाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है वैक्सीन दे करके, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल at our nearest health center in your locality? Which of these diseases are two major health problems in your area? So in our area DPT vaccine is available, and DPT vaccine is given against 3 diseases: diphtheria, tetanus, pertussis, and it is given to all the babies of 2, 3, 4 months of the age. Then hepatitis B vaccine, that is also given to all the babies whose close relatives had jaundice. जिनको जांडिस हुआ हो, जिनके परिवार में किसी को हुआ हो, उस परिवार के बच्चों को तो अवश्य देना चाहिए हेपेटाइटिस बी का टीका, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज वेरी डेंजरस, इट इज लीवर सिरोसिस, ये पूरे लीवर को नष्ट कर देता है, ये लीवर का एक तरह से कैंसर कहा जाता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका बचपन में ही लगवा लेना चाहिए। देन पोलियो
पोलियो के तो टीके हमेशा लगते रहते हैं, तो पोलियो को OPV वैक्सीन लगता है। तो वैक्सीन क्या, उसको ओरली दिया जाता है आजकल ड्रॉप के माध्यम से। MMR ये अभी आपके स्कूल में लगा था पिछले साल। MMR का मतलब होता है मम्स, मिजल्स एंड रूबेला। ये 9 months to 1 year ऑफ एज बच्चे को भी लगाया जाता है। BCG बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन। ये टीबी के अगेंस्ट में बच्चे को दिया जाता है और लगभग सारे ग्रुप के बच्चों को किसी को भी दिया जा सकता है और इससे बच्चा टीबी से मुक्त रहेगा। तो इस तरह ये जो डिजीजेज हैं इनके अगेंस्ट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। दैट्स वाई एवरी पेरेंट एंड ऑल द अवेयर्ड citizens of India, they must take care about it and they must get vaccination of their children against these diseases so that they can be cured, they can be protected from the harmful communicable diseases. अब आप ये क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में, होमवर्क कॉपी में लिखेंगे और पूरी ईमानदारी से लिखेंगे और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना पॉजिटिव कमेंट लिखिए।